Really, they should have chelation done. They should, if they want to improve their quality of life and live a lot longer, as I say, between 7 and 15 years longer. Don't you think that the lead is present also in the fumes coming out from the industries which are not clearing their fumes by some modern methods, and it is allowed to go into the air without filtrations? Does that fumes from the industry also have the lead or no? That's right. That has lead, and there's also mercury coming off, and both are bad for you. And chelation will remove these things, and really, I highly recommend that. As I say, you should live longer. For younger people, if they have certain problems and tests show that they have these problems, chelation will help them. For older people, they will live longer. I also take fish oil, and my young grandchildren, who were rather active and didn't concentrate very well, they have been taking oral chelation pills, which are available in North America, unfortunately not here, and I believe they've gone for a low-level chelation also intravenously, and they're fine. They concentrate better in school, they're getting high marks, and so chelation is, together with checking out other problems, is almost a cure-all for a great many things. विलियम ने कहा कि मुझे याद नहीं रहा बताना कि पाकिस्तान के हवा में गाड़ियों की वजह से और इंडस्ट्री की वजह से, इंडस्ट्री का धुआं और गाड़ियों की वजह से लेड ज़्यादा हो जाता है, जो इंसान सांस के साथ इंसान के जिस्म में चला जाता है. मुख्तलिफ बीमारियों, हार्ट अटैक वगैरह के अलावा भी इसका असर जिस्म में दर्दें, जोड़ों में दर्दें इंसान को होती हैं. मुझे 40 साल की उम्र में जोड़ों में बेइंतहा दर्दें होती थीं, और जब मेरे 5 ड्रिप्स मैंने लगवा ली तो वो दर्दें ख़त्म हो गईं. तो ये किलेशन की वजह से ना सिर्फ लेड बल्कि मरकरी, कॉपर, आयरन और ये सब चीज़ें इंसान के जिस्म से बाहर निकाल देता है और इंसान फिज़िकली फिट हो जाता है. Yes, thank you very much. Anything else you want to tell about it's a really long time we have taken from you, and very important information you have given to our patients, and I'm sure it will be very helpful for them. You want to repeat that in order? मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिस्टर विलियम का, जो कि केमिकल इंजीनियर हैं और कनाडा से हैं, कि उन्होंने बड़े इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है जो कि मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे. और ये बता रहे थे कि मैंने ना सिर्फ मैं करवा रहा हूँ, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरे नवासे और वगैरह नवासियाँ भी केलेशन थेरेपी करवाती हैं, क्योंकि वो पहले इन केमिकल्स, इन मेटल्स की वजह से कंसंट्रेट नहीं कर सक रहे थे, सही तरह पढ़ाई में तवज्जो नहीं दे सकते थे, याददाश्त कम थी. लेकिन जब उन्होंने किलेशन थेरेपी की तो उनकी याददाश्त भी बेहतर हो गई, वो क्लास में बेहतर होना शुरू हो गए. तो इनकी रिकमेंडेशन ये है कि ना सिर्फ जवान आदमियों के लिए और बूढ़ों आदमियों के लिए ये अच्छा है, यंगर जनरेशन के लिए भी, जैसे 14-15 साल की उम्र, 14-15 years children they had this, or what age did you recommend? They were only 8 and 10. इनके नवासियाँ 8 या 10 साल के थे, उनके लिए इन्होंने रिकमेंड किया, और उनके पढ़ाई में बेहतरी हो गई और वो ज़्यादा सेहतमंद हो गए, और वो कंसंट्रेट भी ज़्यादा करना शुरू कर दिया, और उनकी मेमोरी भी बेहतर होनी शुरू हो गई. Thank you very much. Yes, you asked me if there's anything else I want to say. Yeah. There are other things for a good quality of life. and I would recommend them. If Dr. Shahid Abbas
recommends that you have allergy tests, for example, because some problems are caused by allergies and affect the brain, cerebral allergies. Not just skin allergies, which often you can see, or allergies relating to digestion and so on. As I said before, to maintain a good quality of life, chelation for me is very important, and for many people it would be very important to lower blood pressure for all the reasons I mentioned, but also exercise. At my age, I don't run now. I don't run down the street or jog as some people do, but I walk briskly on a treadmill for half an hour. I build up slowly to a certain... I exercise 3 times a week. I do upper body work with weights, and I don't smoke. As far as drinking, I don't drink either. Some people do, and it really is not good. So if you want to maintain a good quality of life, chelation for most people is very important, but you can damage yourself with some of these other things like smoking and not doing any exercise at all, but sitting and watching TV or drinking a lot, which I would not recommend. Really, that's all I have to say. If you want to live a good life, and if you want to live a long life, and see if you want to be a good nano and nana to your children, I would recommend this. Now, before, when I talked about sex, it is important for women also. Women, during their childbearing years, up to 40 or 45, are protected with their various hormones that Allah has given us, given women. They're protected against heart attacks. They have very few heart attacks, very few circulation and heart problems during their childbearing years. Once they don't have children anymore after age 45 or so, or 50 or 40, they start getting poor circulation or heart attacks as men do. Maybe not quite as much, but often a fair amount. Sometimes high cholesterol and other problems. And really, you should be checked out. Dr. Shahid Abbas should check you out, check your blood out for cholesterol and other things if you're a woman. If you want a good quality of life and you want to be around a long time to see your children and grandchildren, it's important for a woman also. Yes, विलियम ने ये बताया कि औरतों में भी जो 40 साल की उम्र में औरतें जो होती हैं, उस 40 साल की उम्र तक उनके हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि वो हार्ट अटैक से बचे रहते हैं और उनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह कंट्रोल होता है। 40 साल की उम्र के बाद उनमें हार्ट अटैक का रेट वही होता है जो आदमियों में होता है। उतने ही औरतें हार्ट अटैक से डेथ होती है जितने आदमियों को। तो इसलिए उनके 40 साल की उम्र में ये रिकमेंड करता हूँ कि औरतों को किलेशन थेरेपी करवानी चाहिए। किलेशन थेरेपी आदमियों और औरतों को भी करवानी चाहिए, और इससे अगर आप चाहते हैं आप हेल्दी रहें, आपकी सेहत ठीक रहे, आप चलते फिरते रहें और आपको किसी किस्म की बीमारी ना हो, तो आप किलेशन थेरेपी करवाएं। ये इनके अपनी ज़बान में ये कह रहे थे, उर्दू में कहने की कोशिश की कि अगर आप नाना नानी बनना चाहते हैं, दादा दादी बनना चाहते हैं, और इनका मतलब ये है कि इतनी उम्र, लंबी उम्र चाहते हैं, तो आपको किलेशन थेरेपी करवानी चाहिए। Right. Thank you very much, William. It is really very informative for our patients. And secondly, you being a chemical engineer, you can appreciate better the blood chemistry than a doctor or anybody else, since it's really a long experience and education that you have got that is more authentic and more helpful for the patients than any doctor can explain.
Well, I'm very happy to help, and I'm happy to help people here in Pakistan. I've been telling some of my friends also about this, and I'm sure a number of them will be coming to Dr. Abbas. There's a man with diabetes that will be coming to see Dr. Shahid Abbas tomorrow, and he's only a young man, but as I mentioned before, with diabetes, the circulation system deteriorates very rapidly. I want to help the people of Pakistan. I'm trying to help them in my power plant work, and if I can help them medically this way by informing them about this very, very good and superior and low-cost treatment, I'm very happy to help. मैंने विलियम का शुक्रिया अदा किया था कि ये कहकर कि क्योंकि ये एक केमिकल इंजीनियर हैं, इन्होंने इंसान की खून की केमिस्ट्री पे काफ़ी काम किया हुआ है, रिसर्च की हुई है, और इन्होंने इनका एजुकेशन जो है और एक्सपीरियंस जो है ब्लड केमिकल्स में वो बहुत ज़्यादा है। तो इनको मैं कह रहा था कि डॉक्टर भी उतना अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि खून में अगर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम बढ़ जाए तो फिर क्या बीमारियां होती हैं। इनको इस चीज़ का एहसास था, तभी सेहतमंद होने के बावजूद 40 साल की उम्र में इन्होंने कीलेशन थेरेपी शुरू की, और अब ये कहते हैं कि मैं चल सकता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि मैं पाकिस्तान में पावर प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान की मदद कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम भी हेल्दी हो दुनिया के दूसरी आवाम की तरह और सेहतमंद हो, ताकि और मेडिकली अगर मैं उनकी मदद कर सका तो मैं समझूंगा मैंने दुनिया में बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मरीज़ इधर मुझे नज़र आते हैं जो सिर्फ इस वजह से सफ़र कर रहे हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं हर एक को कीलेशन थेरेपी जो मुझे मिलता है, मैं कीलेशन थेरेपी के मतलब बताता हूँ कि वो डॉक्टर शाहिद के पास जाएं। मैं अब जहाँ ठहरा हूँ उसका होटल के मालिक जो एक यंग आदमी है और उसको शुगर है, डायबिटीज़ है, मैं उसको भी रिकमेंड कर रहा था कि आप जाएं और कीलेशन थेरेपी कराएं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये कीलेशन थेरेपी की तो उनकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। अमेरिका में भी हो रही है, सारी दुनिया में। तो ये अभी बता रहे थे कि 3 मिलियन लोग कीलेशन करवा रहे हैं यूएसए में। 3 मिलियन का मतलब है 30 लाख लोग कीलेशन थेरेपी यूएसए में सिर्फ करवा रहे हैं, और ये कनाडा में भी इससे तरह कम है, और सारी दुनिया में, यूरोप में भी कीलेशन थेरेपी हो रही है। और इसका असर ये है कि बहुत सस्ती ट्रीटमेंट है, चीपर ट्रीटमेंट है और इफ़ेक्टिव है, बजाय इसके कि आप बहुत महंगी ट्रीटमेंट करवाएं और ऑपरेशन करवाएं, और ऑपरेशन के बाद भी कोई पता नहीं है कि आप बेहतर होंगे या नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मिस्टर विलियम का।